everyone. So welcome to your own channel that is called as Mathematics by Rumina. So let's welcome to my channel, and today we are going to discuss a very important topic that is going to blow your mind like this bulb is doing right now. So let's get started. Today we are going to study integral 7.4. बच्चा प्लीज़ अगर किसी ने 7.3 तक रिवाइज नहीं किया है सो प्लीज़ in the description you will get the link of all the 3 videos that I have uploaded for integrals class 12th applied mathematics. Go and revise it. एंड येस जो यहाँ पे बच्चा मैथमेटिक्स का आया हुआ है मेरे चैनल पर आप भी रिवाइज कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगी, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल, लॉग, अलजेब्रा सब मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स कम एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू स्टडी टुडे. ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. आपके मेनली सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके अंदर यूज़ होगा. सो बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट या थ्योरी बहुत थ्योरी है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू डिस्कस एंड कैसे कैसे हम फॉर्मूलाज आज पढ़ने वाले हैं. सो नाउ when we have integral fx की power n f dash x dx that is equals to fx की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड. डोंट वरी, इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन वी कैन सिंपली सॉल्व आर क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज विच वी हैव यूज्ड इन योर 7.1, 7.2 and 7.3. Now, second formula, that is a very important formula to be discussed over here. This is going to be an important formula for us, and it says us integral f dash x upon fx dx that is equals to log mod fx plus c. Okay, where fx should not be equals to 0, because if this is equals to 0 it is going to be undefined. Now how we are going to use these two formulas, let's come and let's understand it. बच्चा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज ही है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, सॉरी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है. जस्ट कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, कीप ऑन नोटिंग डाउन द पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू, कीप ऑन नोटिंग डाउन द क्वेश्चंस विच वी आर डूइंग इन द video today. Let's get started with your first question, that is integral 2x plus 3 root of x square plus 4x plus 3 dx. Now what to do? Just think very carefully. If you just see x square plus 4x plus 3 and keep this as your t. Okay, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ, now take a derivative on both the sides of the equation. So what I will get? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 2x. 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 4. एंड 3 का 0. सो दिस एंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में. सो इट वुड बी dt ओवर dx. नाउ जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट. सो दैट वुड बी योर्स, सॉरी क्लास, इट वुड बी 4 ओवर हेयर, एक्सट्रीमली सॉरी. अगर यहाँ पे 3 होता तब भी सॉल्व हो सकता था. वी जस्ट हैव टू प्लस ऐड 1 एंड सबट्रैक्ट 1. ओके ना, यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 1 करते तब ये सॉल्व हो जाता. बिकॉज हम एक इंटरवल को बनाते, एक इंटीग्रल को बनाते 2x प्लस 4 और एक बनाते -1 इंटीग्रल ऑफ समथिंग. बट वो वाला फॉर्मूला भी हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो आगे इंट्रोड्यूस हो जाएगा. इसलिए मैंने अभी यहाँ पे 4 को इंटरचेंज कर दिया. क्वेश्चन के अंदर 4 ही था, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया. सो आई गॉट दिस. Now it can be written as 2x plus 4 into dx is equals to dt. That means now I can simplify my writing part as integral. Now just look beta. This full part is your t, so that would be root t. And if you see very carefully, 2x plus 4 into dx, this much part represents your dt. Yes, that's much simple. Now you just have to integrate it. So this would be integral of t की power 1 by 2 dt. Now we know a formula, that is integral of xn into dx that is equals to xn plus 1 upon n plus 1 plus c. तो ये आ गया मेरे पास. अब कुछ भी नहीं करना, just simplify it. So that would be t की power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c. Solve it out. So that would be t की power 1 by 2 plus 1. Take the LCM. So 1 plus 2 3, 3 by 2 upon 3 and numerator में 2 plus c. Just replace your t with x square plus 4x plus 3. So that would be 2 into x square plus 4x
plus 3 upon 3 plus c. And yes, you will be amazed to know, sorry, 3 by 2 as the power also, that yes, this is your correct answer. Yes, it is that much simple. Even जो आगे क्वेश्चंस आएंगे आप उसमें भी देखेंगे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और यूज़ कर रहे हैं. This is not the one single question which I'm showing you. Everyone, please pause the video to note it down. And now, okay, so now I'm going to move on the question number 2. It says me that integral to 4x plus 1 upon root of 2x square plus x minus 7 dx. How to solve it? बच्चा अगर आप एक चीज़ यहाँ से बहुत ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर है, अगर कहीं ना कहीं मैं इसको सॉल्व करती हूँ सो इट विल बिकम 4x. यहाँ पे x है वो 1 बन जाएगा. सो दैट मीन्स if I just do 2x square plus x minus 7 equals to t. Yes, I think सबको क्रैक हो गया है. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. क्लैपिंग फॉर यू दैट yes, मेरे बच्चों को क्रैक हो रही हैं चीज़ें. तो बच्चा कीप ऑन सॉल्विंग इट. डोंट वरी, जैसे ही आंसर आपका आ जाए फाइनल आंसर, प्लीज़ मेरे आंसर से वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा. सो नाउ just take a derivative on both the sides. So that would be 2 into 2 4x plus derivative of x is 1, constant का 0 into dx that is equal to dt. थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर दिया मैंने यहाँ पर. So that would be integral. Now this full part, it would be equals to your dt whole upon. Now this would be root of t. Yes बेटा, बस इसका डेरिवेटिव करना है मुझे. So that would be integral. It would be t की पावर, ये क्या है, t की पावर हाफ है. जब ये न्यूमरेटर में जाएगा so it would be t की पावर minus half dt. Since we know a formula, that is by your exponential formula, sorry, that is 1 over x की पावर n is equals to x की पावर माइनस है. ओके, सो मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ किया है. बेटा सिंपल एग्जैक्टली अपना वही इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x की पावर n dx का, दैट इज x n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now please solve it out. So that would be t की पावर 1 minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c. So यहाँ पे क्या आएगा, take the LCM, so that will be minus 1 plus 2. So minus 1 plus 2 is going to give you 1 by 2. So 1 by 2 over here and 1 by 2 over here plus c. Please substitute the value of t over here to obtain your final answer. So final answer is going to be your t was 2x square plus x minus 7 की whole power 1 by 2 and this 2 in also in the numerator plus c, and yes, that is your answer. I hope it must be very much clear. Now moving ahead, first of all please take a screenshot of this and check your answer. Then I'm going to move ahead. Just 2 seconds more. Now everyone, please come on and look towards your question number 3. It's also a very simple question. I will advise you people to take it as a homework. And किसी को कोई डाउट आए तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स. आई विल लेट यू नो द आंसर. सेम स्टेप करना है जो आपका डिनोमिनेटर है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट के अलावा, दैट इज़ क्यूबिक रूट के अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको आपको टी लेट करना है एंड यू विल गेट 2x फ्रॉम देयर. तो सिंपल क्वेश्चन है, उसी के तरीका है जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था. अ वेरी सिंपल मेथड, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एज वेल. क्वेश्चन नंबर 4, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस क्वेश्चन. यहाँ पे लॉग इंट्रोड्यूस हो गया. आई नो आप लोग लॉग से बहुत ज़्यादा डरते हैं. डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. नाउ प्लीज़ लुक एट द क्वेश्चन. वी हैव log x होल स्क्वायर अपॉन x dx. बच्चा, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ log x? लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ log x? दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. तो बस काम बन गया बच्चा. अपना उठा के log x को t लेट कर दो. व्हेन योर log x इज इक्वल्स टू t, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों का, इट वुड बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. एंड येस, दैट मीन्स इफ यू सी लॉग एक्स क्या था, टी था, सो दैट वुड बी टी का स्क्वायर एंड डी एक्स अपॉन एक्स क्या है मेरे पास, डी टी है. So that would be x square into dt. Yes, you are done with the answer. Now वो same formula use करना, that is integral of x की power n dx, that is equals to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now with the help of this, I can just write this as t की power 2 plus 1, that is 3 upon 3 plus c. Beta in the end, please substitute the value of t and check what is their answer correct or not. The t was log x, so that would be log x की whole power 3 upon 3 plus c, and yes, that is the absolutely correct answer you got. Okay, amazing. Okay,
Now let's move ahead. If anyone wants to take a screenshot, please go ahead. I'm just going to wait for 2 minutes. Now let's get started for the next question. Now the next question is 3 into x plus 1 into x plus log x का होल स्क्वायर अपॉन x. बच्चा देखो, सबसे पहले आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. कैन आई राइट दिस 3 आउटसाइड द इंटीग्रल, कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं. नाउ दिस एज x plus 1 upon x and this would be as x plus log x whole square dx. कुछ नहीं करना है, इसको उठा के t मान लेते हैं. दैट मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, आई जस्ट लेट दिस टू बी माई इक्वल्स टू t. So that means if this is my t, so x plus log x is equals to t. So now what is the derivative of x? That is 1. What is the derivative of log x? That is 1 upon x. And dt का क्या होगा, dt over dx. Take the LCM, so that would be x plus 1 upon x into dx is equals to dt. Yes, you get me correct. That means x plus 1 into dx, ये क्या है, ये मेरा पूरा dt के इक्वल है. और फिर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ टी स्क्वायर बन जाएगा, जो मेरे पास अभी रिसेंटली में बच गया था. ओके, सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व, आई कैन जस्ट राइट माई दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ टी एज 3 इंटीग्रल, दिस वुड बी डी टी एंड x प्लस लॉग x, वो क्या था, t के इक्वल था, सो दैट वुड बी t एंड यहाँ पे स्क्वायर भी था मेरे पास. ओके, सो नाउ दैट वुड बी, just do the integral bacha, we are done by using a formula x की power n with the integral. So that is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c, so that would be 3, and t की power 2 plus 1, that is 3 upon 3 plus c. So 3 and 3 cancel, we can simply write our answer as t was x plus log x की whole power 3 plus c, and yes, that is your final answer. Take 2 minutes, sorry, take 2 seconds, click a photo of this or take a screenshot or note it down, check your answer, and then I'm going to move ahead. Okay, so now I think everyone must have done any of them, or you can just pause the video to see what was the answer. I'm moving ahead. Now the sixth question, that is integral of e. Oh, now there is an exponential, don't worry, it's easy question. इंटीग्रल e की पावर 4x अपॉन 1 प्लस e की पावर 4x का होल स्क्वायर dx. सिंपली बच्चा जस्ट कीप दिस एज योर t, दैट्स ऑल. येस, दैट्स ऑल. अब आप पूछेंगे मैम हाउ डू वी नो कि t कौन सा रखना है? विद प्रैक्टिस. ओके, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू लर्न, बिकॉज मुझे पता है इंटीग्रल ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज 0, सो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा. और e की पावर 4x है. डेरिवेटिव ऑफ ex क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ex हमेशा ex ही रहता है. सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, e की पावर 4x, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, सो बाय चेन रूल मेरे को डेरिवेटिव करना होगा 4x का भी, तो वहाँ से 4 बच जाएगा. क्लियर? इज इक्वल टू dt ओवर dx. सो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट, सो दैट वुड बी e की पावर 4x dx इज इक्वल टू dt ओवर 4. बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब जो ये है पूरा मेरे पास, ये क्या है, ये dt ओवर 4 है, सो 1 ओवर 4 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन, ये क्या था बच्चा, ये मेरा t था, सो एंड यहाँ पे स्क्वायर था, सो t स्क्वायर. जस्ट सिंप्लीफाई इट, सो इट वुड बी 1 ओवर 4 इंटीग्रल t की पावर -2 dt. just use that formula, that is integral of x की power n dx, that is equals to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now many of you will ask that ma'am, is this important to write? Yes, this formula also contain your half marks, so yes, it's important to write. So now you can just simplify it, that would be 1 by 4 t की power, now -2 plus 1, so that would be -1 upon -1 plus c. just simplify bacha. Now minus, I take it outside, 1 upon 4. The value of t was 1 upon 1 plus e की power 4x minus 1 plus c. So you can just finalize your answer by writing -1 upon 4, 1 plus e की power 4x plus c. And yes, that is your answer for this question. I hope that everyone must have understood this much part. If you see, the questions are not even lengthy. They can be finished in one slide only.
So yes, the question are simple. You just have to see the approach that we have to follow for this. Okay. Now I'm just waiting for 2 minutes. Just take a screenshot or whatever you're feeling right. Can go ahead, and then I'm going to move ahead now. Let's start with the next question. That is yours. Uh, 1 up integral of 1 over x log x. First of all, just let your log x be equals to t. आई नो सबको क्लिक हो चुका है दैट येस मैम लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. सो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इट वुड बी 1/x एंड लॉग एक्स, दैट वुड बी डी टी, एंड अपॉन में लॉग एक्स है वो मेरा टी है. अब आई नो सबको पता है दैट इंटीग्रल ऑफ 1/x dx that is equals to log of mod x plus c. So with the help of this I can just write log of mod t plus c, so that would be log x plus c. And yes, that is your answer for this question. That's all. Take a gap. I think your step must be done. Now look on the next question. Yes, this is the most important question and you can say a most discussed question, और ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता भी है. सो बेटा प्लीज़ सी दिस क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. इस क्वेश्चन के अंदर यू जस्ट हैव टू डिवाइड योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x. सो दैट वुड बी e की पावर 2x plus 1 upon e की पावर x whole upon e की पावर 2x minus 1 upon e की पावर x dx. Now what it will be? It would be integral e की पावर 2x upon e की पावर x plus 1 upon e की पावर x whole upon e की पावर 2x upon e की पावर x minus 1 upon e की पावर x dx. Simplify it a little bit. So e की पावर 2x upon e की पावर x, so it will be e की पावर 2x minus x. So e की पावर x plus e की पावर minus x by using the exponential law which I have already told you, it would be e की पावर x minus e की पावर minus x dx. अब कुछ नहीं करना है. Now it's simple. You just have to let this part equals to your t. So that would be e की पावर x minus e की पावर minus x is equals to t. So that would be e की पावर x. डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x का? e की पावर x. एंड यहाँ पे वही अपना चेन रूल. तो e की पावर माइनस एक्स है, इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है. सो दैट वुड बी e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस 1. सो दैट वुड बी माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू dt. सो दैट मीन्स जो मेरा न्यूमरेटर है वो किसके इक्वल आ गया, वो मेरा आ गया dt के इक्वल. सो दैट वुड बी इंटीग्रल ऑफ dt ओवर t. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा इंटीग्रल ऑफ 1/x क्या होता है, दैट इज log x. सो log ऑफ mod t प्लस सी, और मेरा t क्या था, t ये था, बस रिप्लेस कर दो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर. सो log ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c. एंड येस स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट. येस, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा वर्किंग वाला था, तो इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना. कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ भी लेना. सॉरी या सो कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना. इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिस्कस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बस हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट कि हाँ क्या यूज़ होगा. तो सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो इट वुड बी 1/1 प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर माइनस x dx. सो दैट वुड बी 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस 1 ओवर e की पावर x dx. टेक द एलसीएम, सिंप्लीफाई करते हैं. सो 1/1 प्लस e की पावर x, दैट वुड बी योर e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx. अब मैं इस e की पावर x को यहाँ ले जाती हूँ इन माई न्यूमरेटर. सो दैट वुड बी इंटीग्रल e की पावर x अपॉन, और ये क्या रहेगा इन द डिनोमिनेटर, दैट इज 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x. सो दैट वुड बी 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर dx. ओके, नाउ जस्ट लेट दिस बी इक्वल्स टू योर t, एंड येस यू आर डन.
It's amazing to see that how simply you can simplify these questions. The integral is so simple, it's so simple chapter. I don't know why you people feel it difficult, and I hope after watching my video also you must be feeling that yes ma'am, it's actually very simple. It's all about the practice that we are doing. Okay, so 1 will become 0, and e ki power x, that would be e ki power x is equals to dt over dx. So that would be e ki power x into dx is equals to dt. So that means beta, your e ki power x into dx, this full part is your dt. So replace it with dt, and this 1 over e ki power is your t, and this square is also there, so that it would be t square. So now it would be integral of t ki power minus 2 dt. Now but just same formula that I told you, that is integral of x ki power n dx, that is equals to x ki power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So with the help of this formula, this part would be your t ki power minus 2 plus 1, that is minus 1 upon minus 1 plus c. So it would be minus, then 1 upon t, that would be 1 plus e ki power x plus c. And yes children, this is your answer for this question. I hope every part, every concept is beautifully explained and you must be able to understand the things. So thank you so much everyone for joining the videos that I am making, for loving my content. I highly appreciate your efforts to even tolerate my voice, I would say. But yes, I actually love my audience a lot, whosoever is watching my video. So thank you so much for supporting me. I hope to make more videos soon, and please be in our touch. If you have any doubt, you can please connect me. So bye bye for today. Thank you so much for being there. Love you all.